Hello guys. So in this video I will explain a question of given an array of integers. Replace every element with the greatest element on its left side. And also replace the first element with -1 as it has no element in left side. So input is like this. Length is 6 and the array element is 452176 and the output is this. So now let me show you the approach. Firstly, in this solution function, I will take two parameter here. The len is for the length and the a is for the array. And at the initial stage, I take a variable here called max, and I will assign the max value is a0. And then I will also define this a0 value is -1. So अभी यहाँ पे मत समझना कि max की value यहाँ पे -1 है. ये मैक्स की वैल्यू वही होगा जो a0 की इंडेक्स में होगा. अभी आप अगर यहाँ पे कंसोल करोगे VS कोड में मैक्स की वैल्यू को, तो आपको दिखेगा कि a0 का जो वैल्यू होगा 4 होगा अभी, तो वो यहाँ पे रिटर्न होगा कि मैक्स की वैल्यू यहाँ पे 4 है. तो अभी इस a0 को आप यहाँ पे डिक्लेयर ना करके रिटर्न की जस्ट पहले भी उसको डिक्लेयर कर सकते हैं. फिर उसके बाद मैंने फॉर लूप स्टार्ट किया. तो इनिशियलाइजेशन होगा एरे इंडेक्स ऑफ 1 से और वो चलेगा उसकी लेंथ पर. सो यहाँ पे इस कंडीशन में मैंने ये चेक किया कि अगर मैक्स की वैल्यू a1 से बड़ा हुआ तो a1 की वैल्यू मैक्स हो जाएगा. एल्स सिर्फ मैक्स की वैल्यू अगर a1 की लेस देन इज इक्वल टू हुआ, मतलब मैक्स की वैल्यू अगर a1 से छोटा हुआ और a1 की बराबर हुआ, तभी यहाँ पे t इज इक्वल टू a1 हो जाएगा. तो t यहाँ पे टेम्पोररी वेरिएबल है और वैल्यू स्टोर करेगा ai, और यहाँ पे ai इक्वल टू हो जाएगा मैक्स की वैल्यू, और मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा तब t की वैल्यू जो टेम्प वेरिएबल. सो हियर it might be confusing for you to understand the approach here. So let's comes to a log page and see the analogy of this program. So here you can see the input length is 6 here and the array element is this and output should be this. तो यहाँ पे मैंने एक array यहाँ पे डिक्लेयर किया, तो वो क्या होगा, जो हमारे प्रोग्राम की जो फाइनल आउटपुट होगा एक एक करके इस ब्लॉक में स्टोर होता जाएगा. और यहाँ पे एट द इनिशियल स्टेज a0 की वैल्यू, मतलब न्यू जो एरे यहाँ पे क्रिएट होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे -1 होगा. तो अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मैक्स की वैल्यू एट द इनिशियल टाइम a0 की वैल्यू होगा. तो a0 की वैल्यू अभी है 4. यहाँ पे अभी फॉर लूप चल रहा है 1 से. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैक्स की वैल्यू अभी 4 है और यहाँ पे a1 मतलब ए एरे की एक नंबर इंडेक्स में वैल्यू है 5. तो यहाँ पे 4 क्या 5 से बड़ा है, so it is a false here. So now it comes to LC block. Max value is now 4 and AI value is now 5. And now this condition will be true here because this AI value is more than max value. So now this temp variable will be stored the value of AI. So that is 5. एंड यहाँ पे AI की जो वैल्यू होगा वो होगा यहाँ पे मैक्स की वैल्यू. तो मैक्स की वैल्यू अभी यहाँ पे 4. तो यहाँ पे AI की वैल्यू हो गया 4. तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अभी तो AI मतलब यहाँ पे 1 ये हो रहा है, मतलब यहाँ पे फॉर लूप में अभी 1 इंडेक्स में है हम अभी. तो इसलिए यहाँ पे a1 की वैल्यू स्टोर होगा 4, क्योंकि 4 ही मैक्स की वैल्यू है मतलब अभी के लिए. तो यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया 4 एंड मैक्स में रिटर्न कर दिया टेम्प में जो वैल्यू है उसकी वैल्यू. यहाँ पे क्या स्टोर है वो है 5.
So now the new max value is 5. So it will come here, and now the for loop will be turned into the next index of the array I. So now it is 2. So at the second index, what is value here? तो अभी यहाँ पे ये if condition ट्रू हो गया कि यहाँ पे मैक्स की वैल्यू ए आई से ग्रेटर ही तो है. सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए आई की वैल्यू मैक्स स्टोर करा देंगे. तो अभी मैक्स की वैल्यू कितना है, अभी 5. So now come into the next index, that is the third index. So in the third index, the value is 1. So again, this condition will be true here. So that's why this third index of the new array also get the value of 5. And now time for the fourth index. So this value is now 7. So now अभी ये कंडीशन तो फॉल्स हो गए, तो उसके लिए अभी क्या होगा, अभी हमारे प्रोग्रामिंग की कंट्रोल फ्लो स्टार्ट होगा एलसी ब्लॉक से. तो अभी यहाँ पे मैक्स की वैल्यू स्टोर हुआ है 5 एंड ए आई की वैल्यू स्टोर हुआ है 7. तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कंडीशन ये ट्रू है या तो तभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्प की जो वैल्यू होगा अभी वो होगा ए आई की. तो ए आई यहाँ पे क्या है, ए आई यहाँ पे फोर्थ है क्योंकि हम अभी फोर्थ इंडेक्स में है. तो अभी यहाँ पे टेम्प की वैल्यू हो जाएगा 7 एंड ए फोर्थ विल बी स्टोर द वैल्यू ऑफ मैक्स. So the max value is 5 here. So अभी यहाँ पे A4 की वैल्यू अगर 5 हो गया तो इस एरे में भी 5 हो जाएगा यहाँ पे. एंड देन the max value will be stored the temp value. तो अभी temp वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर है, 7. तो हम उसके लिए यहाँ पे 7 दे देंगे. So now the max value is 7 here. So that's why the new max value is also changed from here also. Now it's time for the fifth index, that is 6 value. So here I change the index number. So now the AI value will be changed here. So here the A will be contain the fifth index value. So I mean here is the fifth. So now this condition is true here, max A5 से greater ही तो है यहाँ. So this condition is true here, that max value is greater than A5. So that's why this AI or this A5th index value will be stored the max value. So that is 7 here. So that's why here this 7 also coming. So this simple things I implement here. और इस codezinger में एक इंटीजर वैल्यू को यूजर इनपुट लेने के लिए इस लाइन को यूज करना, परसेंट एंड read line. So here in this percent, this I is capital, and in this read line, this L should be in capital. Thank you guys and bye.